चलो सब लोग रेडी? But in the last lecture, we have started with a new type of distribution, which was being called to be as sorry, Poisson distribution. And when we have started studying about the term Poisson distribution, so in that Poisson distribution, we have learned that a Poisson distribution, it was based upon the three assumptions, and that three assumptions were according to the Simon, Danish, Poisson. We can make the use of Poisson distribution only when first condition, the number of trials, Eric. Only when the number of trials, they are considered to be as very large, such that the value of n, it tends to infinity. Second, according to the James Bernoulli, the probability of success, P, is considered to be as a very small, such that the value of P, it becomes tends to 0. N was considered to be as very large. P was considered to be as very small. NP it became a finite number, so that what NP was called to be as even NP, it was being called to be as it was being called to be as the mean of a Poisson distribution. Yes, very good. And that mean of a Poisson distribution, it has been denoted by using a Greek notation, which has been called to be as lambda or it has been called to be as m. Both of them are the standard notations, but we'll be using a lambda. Preferably, we'll be using a lambda. And then lecture begins. Formula used. Formula used. And right on. Next one. By leaving two finger space. By leaving two finger space. Right on.
for Poisson distribution for our Poisson distribution form our the probability of getting x successes, probability of getting x successes is given by is given by p of x is equal to x, which is equal to p of x, which is equal to lambda raised to x into e raised to minus lambda upon x फैक्टोरियल। फॉर्मूला कैसे रीड करना पड़ेगा, देखो p of x is equal to x, which is equal to p of x, which is equal to lambda raised to x into e raised to minus lambda upon x factorial, where where lambda is equal to n into b, lambda is equal to n into p, and here but the meaning is the same. N means it is the number of trials, p means it is a probability of success, e is a exponential constant, e is a exponential constant, and the value of e is 2.718. For your knowledge or extra knowledge, the value of e is 2.718. Next one, x is the number of successes, x is the number of successes, x is the number of successes. Next line, where the value of x is less or equal to n. The value of x is less or equal to n. That is
the value of x always where it is equal to 0, 2, 3, n, where x is equal to 0, 1, 2, 3, n. And again here the same. X represents the whole number. X represents the whole number. थोड़ा सा बोलो। अब ये देखो, but in this given formula, you are not supposed to worry about e raised to minus lambda. You are not supposed to worry about e raised to minus lambda, because the value of e raised to minus lambda, it will be given directly in the given question. The value of e raised to minus lambda, it will be given directly into a given question. समझा सको? उसका तुम लोग को बेटा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सब में बड़ा लैम्बडा दिया है तो इट इज वेल एंड गुड, और अगर सपोज बड़ा लैम्बडा नहीं दिया है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा बाय यूजिंग द फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू n into b. But in this given formula, there is only one parameter, and that one parameter is a lambda. I repeat, there is only पढ़ाई के लिए one मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट is तैयारी। only one parameter, and what is that one parameter is lambda, lambda. One match code, and since Poisson distribution, it is comprising of only one parameter, only a one parameter. Therefore, Poisson distribution, it is called to be as uniparametric distribution. Uniparametric distribution. अब रेडी हो और मुझे आंसर दो। व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज एन एग्जांपल ऑफ
कौन बताएगा बेटा मुझे, कोई आंसर दे सकता है? किसी को आंसर पता है बेटा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ very good, Savio. It was an example of a biparametric distribution. Why it was a biparametric? Because it was comprising of two parameters, and that two parameters were n and p. बराबर है? चलिए next, like a binomial distribution, even a Poisson distribution, Eric. It is an example of a discrete theoretical distribution. Discrete, because in this given distribution, a random variable will take only a complete values like 0, 1, 2, 3. बेटा वो कोई भी वैल्यू डेसिमल पॉइंट पे नहीं लेगा, therefore it is called to be as a discrete theoretical distribution. And after knowing this, write down the heading to be as okay, mean and variance. Mean and variance. Mean and variance. Or Poisson distribution. Mean and variance. Or Poisson distribution. And write down. Next line, for a Poisson distribution, for a Poisson distribution, for a Poisson distribution with either lambda or m to be as a parameter for a Poisson distribution with lambda or m to be as a parameter, to be as a parameter, its mean and variance, its mean and variance is defined to be as its mean and variance is defined to be as mean is equal to variance
is equal to what variance, it is equal to lambda or m. चलो, what is the conclusion? मुझे बताओ इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कोई आंसर दे सकता है बेटा मुझे? नो वन? For a Poisson distribution, mean and variance, it will be always a same. क्या हो तुम लोग को बड़ा आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आज क्यों इतना तुम लोग सब लोग बड़ा चुप चुप हो, सब नाराज हो गया मुझसे? बड़ा आंसर क्यों नहीं बोल रहे? ये देखो, फॉर अ Poisson distribution, mean and variance, they are always the same, and that same value is none other than it is a lambda or it is a m. It is a lambda or it is a m. समझा? Mean, variance, they are exactly one or the same. बट चलो मान लो कि यहाँ पे बड़ा सहयोग जीत करे, रोने लगे और कहने लगे कि सर मुझे इंडिविजुअल फॉर्मूला चाहिए, इंडिविजुअल है ना? सब लोग देख सकते हो बड़ा सहयोग की हालत, सब लोग देख सकते हो। मुझे सेपरेट फॉर्मूलाज पढ़ चाहिए। तो वो सभी को बड़ा हम लोग चुप कर सकते हैं, मत रो मत रो मत रो। तो इसका आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं? मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। चलो भाविका, अगर मीन का वैल्यू n इंटू पी है तो चल मुझे बता वराइंस का क्या होगा फॉर्मूला? वेरी गुड, वराइंस इज इक्वल टू n इंटू पी। चलो नेक्स्ट सवाल। मेरा चैनल लाइक नहीं करूंगा मैं आंसर अगर नहीं बोला तो। वराइंस इज इक्वल टू n इंटू पी। तो तुम लोग मुझे बताओ वराइंस में से बड़ा मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल सकता है? डबल पुजारी, there exists a relation between the standard deviation and variance. The standard deviation is the positive square root of variance. It will be standard deviation is equal to the root of np. चलो अभी जागा ना बड़ा डबल, अभी उठा ना बड़ा तू। फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला कि सर तुझे बुला रहे, तभी जागा ना तू डबल। आवाज कम आ रहा है, तेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है बड़ा तुम लोग को? बाकी सब लोग बड़ा रिप्लाई करो मुझे, एकदम क्लियर आ रहा है बड़ा सबको?
ओके चल बड़ा। हाँ अब ये हो रहा है। अब तुम लोग ने बड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया है और तुम लोग ने बड़ा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया है। तो ये दोनों में बड़ा तुम लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन